હેપીએસ્ટ માઇન્ડના પરિણામો આવતા દેખાયા હતા. એના ઉપર કંપનીના એમડી અને સીએફઓ વેંકટરમણ નારાયણ અને ડિજિટલ બિઝનેસ સર્વિસના પ્રેસિડેન્ટ અને સીઈઓ રાજીવ શાહે આપણી સાથે વાત કરી હતી. આવો એક वक्त एना ऊपर नज़र कर लिए और एमनी साथे આપણે चर्चा करिए. सर्वप्रथम तो जिस तरह से हम सर देख रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट का आउटलुक जिस तरह से बदलता हुआ दिखा, इसके साथ साथ आपके रेवेन्यूज़ और ग्रोथ में भी एक परफॉर्मेंस में हमने अच्छा खासा पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखे. रेवेन्यू ग्रोथ का आउटलुक को आप किस तरह से देख रहे हैं? कौन से सेक्टर्स, कौन से वर्टिकल रहे जहां पे Q2 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है? So if you look at the growth, it has been 8% quarter over quarter. वो sequential quarter over quarter 8% था और year over year था 40%, 45% डॉलर टर्म्स में और 46% अगर रुपी टर्म्स में देखोगे तो the growth has come equally across all the verticals क्योंकि हमारा demand has been secular. It has been across all verticals. So there has been, I wouldn't want to say one vertical or particularly one vertical which has grown. Growth બધા geographies માં બી સારો થયો છે. તમે જુઓ તો યુરોપ, US, મિડલ ઈસ્ટ વેર અમે નવી જીઓગ્રાફી ચાલુ કરી હતી અને ઇન્ડિયા જીઓગ્રાફીમાં as well. So બધા વર્ટિકલમાં as well as જીઓગ્રાફી ગ્રોથ સારો થયો છે. અને થર્ડ લેવલ ઓફ ધ સેગમેન્ટ અમારા જે ત્રણ સેન્ટર ઓફ એક્સપર્ટીઝ અમે કર્યા હતા COEs, એમાં પણ ઘણો સારો ગ્રોથ અમને મળ્યો છે, એનાલિટિક્સ, IoT અને DPA. ओके सर, इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी समझना चाहेंगे कि प्रॉफिट इस बार आपके हायर साइड पे रहे, लेकिन मार्जिन के फ्रंट के ऊपर जो प्रेशर रहा है, क्या फैक्टर्स रहे, कौन से रीजंस की वजह से मार्जिन यहाँ पे सप्रेस होते हुए दिखे और आगे का आउटलुक किस तरह से आप देख रहे हैं? On margin front, we were at about 26.1% EBITDA in the previous quarter. And in this quarter, we were just down 0.5%, नीचे 25.6% पे आए हुए for this quarter. Primarily because we allocated 1.4 crores जो pandemic में Happiest Minds family, we lost 7 of them. And उन लोगों के लिए families of those who lost their lives during the pandemic period, we had a one-time kind of a beneficial plan made for them. So that's the adjustment. If you take into account that, we are back to better than what we did last quarter. 26.1% से भी बेहतर है. तो हमारा प्रॉफिट में कोई कमी नहीं हुई है. In fact, adjusted ऊपर ही गया है. The second thing is, I have been constantly guiding that long term के लिए हमारा प्रॉफिट नंबर का रेंज रहेगा 22 to 24% के बीच में, क्योंकि जब हम वापस ऑफिस आ जाएंगे जनवरी से, वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू हो जाएगा, तब थोड़ा बहुत वो जो सेविंग में था, ट्रैवल कॉस्ट और रेंटल कॉस्ट और कैब और सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वो सब वापस आने की संभावना है और इसीलिए प्रॉफिट का नंबर थोड़ा कम हो सकता है. बट the sustainable number has been 22 to 24%. We've been saying that, but we have been able to deliver at 25-26% over the last 6 quarters. અને ગયા ક્વાર્ટરમાં અમારો કોમ્પેન્સેશન અને સેલરી રિવિઝન પણ હતા, એટલે તે છતાં પણ અમે લોકોએ સારા માર્જિન ડિલિવર કર્યા છે. લાઈક વેંકટ ટોક્ડ અબાઉટ કે અમારી કમ્પેશનેટ સ્કીમ હતી કોવિડ ઇમ્પેક્ટેડ પીપલ અમારા કલીગ્સ માટે, અને બટ ઇવન વિથ ધેટ we've been able to maintain the margin at 25.6%. ओके सर, इसके साथ डॉलर टर्म्स रेवेन्यू के आउटलुक को आप किस तरह से देख रहे हो? और जियोग्राफी वाइज परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो जैसे रीओपन धीरे धीरे अभी कंट्री वाइड हो रहा है, तो इसके चलते हुए क्या इम्पैक्ट हम यहाँ पे देख पाएंगे? Dollar revenue has been 8% quarter over quarter और year over year 45% था. तो the earlier quarters जो pandemic period में था, वो Q1 of last year we had a blip. उसके बाद we have been able to do, last year we did 2% year over year during the pandemic year जो बोलते हैं. So 2021 में we did 2.4% dollar growth, and this year the dollar growth has been significantly higher. This quarter it's about 8% and year over year it's 45%. थोड़ा बहुत base effect था, but we are seeing significant traction on the dollar growth numbers.
As far as your geographical performance है, so US still continues to be our largest geography. 66% का revenue उस geography से आ रहा है. India 13%, Europe 11%, और rest of the world 10%. This percentage has remained fairly constant in absolute terms, क्योंकि हर geography जो हम enter कर रहे हैं, rest of the world तो 3% था FY18 में, अभी तो वो 10% हो गया. तो जब वो ग्रोथ होता है थोड़ा, तो यूएस में परसेंटेज टर्म्स में कम दिखाई देता है, बट इन एब्सोल्यूट टर्म्स एवरी ज्योग्राफी हैज बीन ग्रोइंग wherever we have entered. फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट हमने एंटर किए थे 2-3 साल पहले, और उधर का ग्रोथ has been significant for us. ओके, साथ ही सर BFSI और ट्रैवल अगर हम देखें तो वहाँ पे हमने एक पॉजिटिविटी आते हुए देखी थी. नेक्स्ट क्वार्टर के लिए अभी किस तरह की उम्मीद हम यहाँ पे रख सकते हैं? क्या पॉजिटिविटी का ट्रेंड यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ देख पाएंगे? हमारा पहला तो हमारो ट्रैवल नो बिजनेस तो घणो ओछो હતો. The travel no to very negligible, although we classified as a TME. મોટા ભાગનો બિઝનેસ મીડિયા એન્ટરટેનમેન્ટમાંથી આવતો હતો. ટ્રાવેલનો very low number. અને વેંકટે વાત કરી એ પ્રમાણે we have partnered with a company called TechForth as really helping us drive the growth in that industry segment. So over the next several years, તમે ટ્રાવેલમાં ગ્રોથ સારો જોઈ શકશો. BFSI માં in absolute number growth તો છે જ, કારણ કે અમે ઘણી ડિજિટલ રેડી એપ્લિકેશન્સ વાળી કંપની સાથે પાર્ટનરશિપ કરી છે, એના લીધે ગ્રોથ તો થયો જ છે. પણ બીજા 1-2 ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ પણ કરી રહ્યા છે અમે, પ્રોસેસ ઓફ recruiting some senior folks as well as expanding our presence. So BFSI will also continue to grow, especially in the fintech area, where it aligns very well with our digital story. So if I fast forward, I think both travel and BFSI will continue to play a significant role in the future growth as well.